Here means the master, the owner of the dog. Now we have read in the last paragraph that the dog was dead. He was killed by the wicked farmer. And what happened now? The owner of the dog heard of the death. When this news, when it came to the owner of the dog, of his pet, so this dog was the pet of the farmer, and this dog was killed by the next farmer who was very wicked, One of the news, it comes here to the owner. एक बार जब ये न्यूज ओनर तक आ गई तो क्या हुआ? Mourning for him as if he had been his own child. Mourn, M-O-U-R-N. M-O-U-R-N. Mourn means to grieve. G-R-I-E-F. Grieve. मातम करना. Mourn. So what the जो owner है, he started mourning, lament, another word for it, lament, L-A-M-E-N-T, lament, to grieve for something. Whenever there is a tragedy, जब कोई tragedy होती है, so what we do, we generally lament for that tragedy, हम उस पे मातम करते हैं. Because this was not a common incident. The dog was very pet for the owner. So when such a dog was killed, who has enabled the master to earn a lot of gold coins. So when such a news comes there, it is very shocking. So what he started? He started mourning. He started to grieve for it or to lament for it as if he had been his own child. As if there is death of a child, the father and the mother, they are very much shocked, tremendously shocked. So since this dog they were feeding the dog as a child, as their own child. So this death was not an ordinary one, it was valuing more than their own child. So what they did, they started mourning and matam karna shuru kiya. Went at night under the pine tree, out of grief, दुख के मारे. इसकी जो इंटेंसिटी है, दुख की शिद्दत इतनी ज्यादा है, the intensity of this news is so shocking. तो उससे रहा नहीं गया. What the farmer did, what the owner did, वो निकल गया in the night. And where he went to a pine tree. He went to a pine tree. Pine, you know? Kayan वो उस ट्री के नीचे गया. He set up some bamboo trees in the ground. तो जब ये वहाँ पहुँचा, तो उसने वहाँ पे गाड़ दिए कुछ bamboo B-A-M-B-O-O, bones. जैसे हमारे पास छोटे होते हैं, हमको रीड कहते हैं, रीड. नर्व ट्रेन नर्व कलम सुना था, इसको रीड बोलते हैं. क्या बोलते हैं? रीड. ये R-E-A-D नहीं है, R-E-A-D. तो फार्मर ने क्या किया? Once the farmer reached where? Under the pine tree, what he did? He fixed some bamboos in the ground. उसने कुछ जो बांस है उनको ठोस दिया जमीन में, such as are used before tombs. जिस तरह हम किसी जो famous personality जब मरती है, whenever there is death of a renowned personality, death of a saint, किसी बड़े जो मजहबी पेशवा होता है, इसकी डेथ होती है, या डेथ ऑफ ए रॉयल फिगर, जो कोई रॉयल पर्सनालिटी होगी, तब उसके कबर के ऊपर over his grave we build some structure different materials. जैसे we see the Taj Mahal, it is on the tomb of Mumtaz, है ना? तो इधर भी हमने बहुत सारी जगहों पे देखा है, we see there are some structures built over the graves
they are called tom. Tom, T-O-M-B. Tom means B silent, it is tom. T-O-M-B. The pronunciation is tom. Tom. तो इसको उर्दू में मकबरा कहते हैं. So like that, इसने why he fixed these bamboos? He wanted to build something like a tomb because whenever there is death of any loving personality, his descendants, उसके जो ज्ञानशील होते हैं, they generally build some special structure for the grave. Same is done here. He put fresh, in which he put fresh flowers, और ये बना के बांबू का जो स्ट्रक्चर उसने बनाया, इसके कवर के ऊपर डॉग जो जिसकी डेथ हुई है, अब इसने वहाँ पे इसने रखे हैं some fresh flowers. Fresh means ताज़ा fresh, F-R-E-S-H fresh. अगर fresh तो ताज़ा, what is the antonym of fresh? यूसुफ ताज़ा इसकी, जिसको उर्दू में आप बासी बोलते हैं, बासी साढ़े जब टाइम कम होता है इसके साथ इसमें फ्लैश ऐसे स्टेल S-T-A-L-E-D स्टेल इसका एंटोनिम है. Now what he did, he put some fresh flowers toward the tomb. Then he laid a cup of water and a tray. फिर इससे he took a cup of water and a tray. Tray, you know, tray. मजबूरी आती है तुम्हें, ठीक है? Tray of food, and what was in the tray? Food was in the tray. What was in the tray? Food was in the tray. And he put this water and this tray that is filled with food on the grave. On the grave means cover. Grave, G-R-A-V-E, grave, cover. And if we use here in grave, otherwise than E-N, G-R-A-V-E, then it becomes verb. It becomes in grave का मतलब है दफन करना, कब्र में डालना. Grave का मतलब है कब्र, in grave का मतलब है दफन करना. और graveyard अगर होगा, graveyard तो कब्रिस्तान. Graveyard means कब्रिस्तान. किस वर्ड में? एक grave कब्र, in grave दफनावन, and graveyard कब्रिस्तान. Then he laid a cup of water and a tray of the food and the grave on the grave. इसने इसको रखा वहाँ grave पर and buried several costly sticks of incense. तो उसने वहाँ पे bury means दफन करना, bury, B-U-R-R-Y, bury is a verb. The bury इसकी second form है, bury इसकी third form है. और अगर इससे मैं निकालूंगा B-U-R-R-I-A-L, burial, इससे burial निकला दफनाना, कफन मीन्स कराची बादल पालन, ठीक है? इतना क्या गुजरा? तो इसका जो कफन दफन है इसको burial हम कहते हैं. और जहाँ पे उस ग्राउंड उसको burial ग्राउंड भी बोलेंगे. बरी इसे निकला burial, ठीक है? तो इससे क्या किया? He bury means to put something under the earth. जमीन के नीचे कुछ रखना. क्या किया इसने नीचे रखा? He some costly means expensive, महंगा, costly, कीमती, which are of high price, जिनका प्राइस ज्यादा होगा. Sticks of incense है मुश्किल. Which gives a good smell. अगरबत्ती, उर्दू में क्या बोलते हैं? वो उसे दफनाए उधर. He mourned a great while, और वहाँ बैठकर ये सब कुछ करके, what he did, he camped there under a pine tree. Then he fixed some bamboos and raised a sort of tomb over the grave. Then he put some fresh flowers over the grave. Then he put some water and and some food that was in the tray. Then he buried some sticks there
तो फिर क्या होगा एंड ही मॉर्नर पत ब्यूटी कैसे साइड को ही मॉर्नर ओवर हिज बैक तो जब ये मातम कर रहा था when he sat there after doing all this what he did he was mourning he was calling in many their name he was in all of them यदि काम मराठी when somebody very keen very close that we have a very close affinity जब हम किसी के साथ बहुत ज्यादा affinity होती है लगाव होता है और उसकी डेथ होती है तो during the morning we cry and we say many words तो इसे बना क्या क्या इसमें बना very loud shoes बना many pet words he was calling him many he was all of them covering that तुम नावों से with all those good names यमो असल नावों से थी यमो सुकारा those as if he were alive so he was calling him as if he was जैसा कि जानवर सुन जिंदा इसका ऐसे कि जिंदा साला करा so this tells us that the bond means the relation between the farmer and his dog and this dog so we don't find any difference when somebody's son dies when somebody's son is killed जब किसी का बेटा मारा जाता है तो जो जिस गम का जो शिद्दत होती है the same is the case here there is no difference we see that this dog was as if it was the son of the farmer it was the son of the farmer that night अब क्या हुआ उसी रात जब ये सब कुछ कर रहा था he was doing all that night the spirit of the dog appeared तो उसी रात क्या आया spirit S-P-R-I-T आत्मा रूह इसकी आत्मा जो है of the dog appeared him in the train means car means ख्वाब and said तो क्या बोलना who came the dead dog the spirit of the dead dog came into the drain तो उसने क्या कहा फार्मर को ख्वाब में क्या बोला cut down the pine tree दोनों से काय पूछेरो देवदार पूछेरो सेटियर cut down the pine tree over my grave जो मेरे कब्र के ऊपर जो बड़ा सा प्लॉट है पाइन का उसको काटो and make from it a mortar M-O-R-T-A-R mortar and another word है इसके साथ जुड़ा होता है P-E-S-T-L-E इनका तो एक very आसान शुरू वक्र उसको मोटार कहते हैं ओखली इसको उर्दू में कहते हैं और युस्तात काजमट पैटा सा चिया छोट इंटर देगा that is called pestle that is called P-E-S-T-L-E pestle and mortar combination तो बड़ा जब हम लेंगे तो कांस ऐसा सा कांस क्रिस्टल गरस में आए इन मौजूद आप इन कांस पैसा सा मुंह जना और इसी तरह इसने इसको कहा कि आप एक काम करो you just cut down this pine tree आप इस pine tree को काटो और क्या करो cut down the pine tree to my grave and make from it a mortar आप बना आप कंस क्या बनाओ means when we have a big block of wood which is having a large groove yet very much and if we try to dig it in the middle अगर हम इसको बीच में सपोज ये बड़ा सा वुडन लॉग है इसकी विड्थ बहुत ज्यादा है हम बीच में खोदेंगे देयर इट विल बिकम hollow inside अंदर से ये खोखला बनेगा कौन वक्र है तो उसको चेजल करके काट के अंदर से we can turn this big wooden log into a mortar अगर ये पत्थर भी होगा पत्थर का भी हो सकता है आयरन का भी हो सकता है just this cutting from within
तो अंदर से इसको हम काट के we will get a hollow space and we will get a motor. तो क्या हुआ यहाँ पे, इससे इस आत्मा ने इससे कहा cut down the pine tree over my grave and make from it a motor for your rice pastry. बात बना हुआ इनसे याद मत तुमुल दाएं एक मिनट क्या ये तुमुल है पर इसके आज मशीन से this करा नॉन बाय कांसेस मत ये ठीक मत करना डार्क अब क्या मतलब सारा है तुमुल देरा अलग कोई देरा and a mill for your clean bean sauce and they were also grinding the beans राजमा पीसते हैं आप जैसे किसी के घर में ग्रट आ सकता ग्रट वो कैसा करते हैं इसका अंदाज ना हो या पैच ग्राइंड वाला फैक्टर्स मोइनस से देखिंग वाइट तो इसे इसको कहा यू जस्ट कट डाउन द पाइन ट्री और उसको बीच में काट के एक मोटर बना ताकि you will get a handmade machine for grinding the beans and for grinding the rice. तो इसके बाद क्या होगा? तो let us see what will happen after that. So the old man chopped down the tree. Chop means to cut off. Chop means chop down the tree and cut out the middle. और इसने cut out the middle इसने बीच का निकाला अंदर का और the trunk a section about 2 feet long 2 feet अंदर से उसको अंदर से काट लिया है तो उसको अंदर एक जगह बन गई with great labor यानी बहुत मेहनत इसमें लगी with great labor with great efforts partly by fire partly by chisel अड़म जाए बनाए अंदर by fire जाल से partly by chisel किसको बोलते हैं सोर क्या सोर से है ना सोर से अपना डॉक्टर चार्ज को थोड़ा हाइट chisel उसको बोलते हैं CHISEL chisel it is an instrument that is used for digging out the wood or the stone or the he scraped out a hollow place as big as a small bowl जितनी एक small bowl होती है उतनी ही जगह उसने अंदर उसने काट के बनाई है and first by using the fire and half was done by using the chisel he then made a long handled hammer of wood फिर इसने hammer बनाया हथौड़ा किसका लकड़ी का यानी ये मोटर ये कैसल के बदले such as is used for pounding rice यानी जिससे हम राइस को पाउंड करते हैं pounding the rice means grinding the rice pounding means grinding पीसना such as is used for pounding the rice when New Year's time drew near जब नए साल का वक्त नजदीक आया he wished to make some rice pastry क्या उस टाइम उसको पेस्ट्री बनानी थी by grinding by pounding the rice and the beans he was going to make some pastry when the rice was all boiled पहले उसने राइस को बॉयल किया राइस को क्या किया grinding put it into the mortar फिर boiled rice को उन्होंने किस में डाला mortar में आप कांसेस में the old man lifted the hammer फिर उसने ये हथौड़ा उठाया to pound the mass आप इसको मारना है कितने मास लगा to pound the mass into dough of his old bun ये जो बसवा है तुम इस दलवन पे आ गया है ना dough DOUGH तो डक नहीं पढ़ना चाहिए DOUGH dough मंडे को old सुनो यो रखना dough and the blows fell heavy occupied blows होता है dab करता है dab and fast till the pastry was all it's not heavy blows कि until it changed into a paste इसका क्या बने paste बने that is called pastry was all ready for baking and for pastry coming back means उसको आग में डालना है आग में डाल के उसको पकाना है इसी तरह से पे पाइन बैक कर दाल उसमें घुसी
Grand knowledge. Back is my one. Suddenly the whole mass turned into a heap of gold coins. लेकिन क्या हुआ? अचानक जितना उसने राइस इसमें डाला था, ये सारा का सारा it turned into gold coins. It turned into gold coins. When the old woman took the hand mill and filling it with beans, और जब इसकी बीवी ने उसको भर दिया beans से, इसे राजमा तितरावा आत्मा began to grind. इसने grind पीसना शुरू किया, the gold dropped like rain, और वहां से टपकने लगा सोना जिस तरह बारिश टपकती है. That is all about today's lesson.